Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to Unacademy. You are watching Unacademy OPSC and India's largest e-learning platform. In today's morning session, I have started discussion on national income. So national income re hame discuss karthile ki jemti the way in which we can calculate income of a particular person. In the same way, we can calculate income of the entire nation. ठीक अछि जाको हमें national income बोली कहउथिले and we discussed in the morning session we discussed that there are three methods: income method, expenditure method, and product method or value added method to calculate the national income. National income को calculate करिवार तीनटा method अछि हम यहाँ discuss करथिले. एथर हम income method ऊपर discussion start करथिले. Sorry, production method ऊपर discussion start करथिले in the morning class. वर्तमान हम discuss करिवा GDP, GNP या ऊपर हम discussion करि सारथिले. GDP and NDP ऊपर discussion करि सारथिले and now we will discuss about GNP. Now we will discuss about GNP. Let's start the discussion on GNP. Gross National Product. हमें GDP रे कौन पढ़ते in GDP we have discussed कि inside India in a particular financial year the total quantity of final goods and services. Remember this term, final goods and services. यार monetary value जति की फाइनल गुड्स सर्विसेज कौन मु मॉर्निंग सेशन में डिस्कस करथिली यार मॉनेटरी वैल्यू टोटल अमाउंट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू को हमें कहउतले कि दैट इज कॉल्ड जीडीपी एंड इन दिस रिगार्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल कांसेप्ट गोटे छोटो जिंस बुझिबा पड़िबो कि इनसाइड इंडिया देयर आर मेनी फॉरेनर्स हु आर वर्किंग many foreigners from other countries they are working in India and there are many Indians who are working in the foreign countries. So what happens at the ultimately means at the end of the day what happens end of the day आमे जदि देखिबा बा end of the financial year जदि आमे देखिबा एटी कोन बुझिबा कि इनकम इंडिया रु बाहर को जाउछि किछि इनकम बा फॉरेनर माने जो माने इंडिया रे इनकम करछन से माने इंडिया रे केबे समान कर इनकम रहइबनी एंड फाइनली दे विल गो अवे विथ देयर ओन इनकम से माने इनकम नै तांगा इनकम नै कि दे विल गो टू देयर नेटिव प्लेस and in the same way जो इंडियन माने फॉरेन ने काम करछंती सो दे विल कम टू इंडिया along with their income से माने इंडिया को तांकर इनकम माने के आसीबे इटी दीटा कांसेप्ट ऊपर हमर डिस्कशन होची बा दीटा प्रकार जिंस हम बुझछंती कि गोटे इनफ्लो ऑफ द करेंसी एंड आउटफ्लो ऑफ द करेंसी एटी करेंसी ऊपर जदि हम डिस्कस करबा देन एटी दीटा कथा होची गोटे इनफ्लो इंडियन माने जे इंडिया को बाहर काम करछन इंडिया को आणछन एंड द सेकंड वन इज द आउटफ्लो इंडिया रु जो माने फॉरेनर अछन से माने इंडिया रु नेकी जाउछन एंड यार जो डिफरेंस ताको कहआ जाय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिस इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड फाइनली जो हम जीडीपी कैलकुलेट करिथिले जीडीपी रु जेतेबेले हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को सब्ट्रैक्ट करंती देन यू विल बी गेटिंग जीएनपी जहा हम मिलिबो ताको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोली कहबा दैट इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन द सेम वे जीएनपी जेतेबेले हम कैलकुलेट करछंती जीएनपी रु हम जदि माइनस करबा डेप्रिसिएशन देन वी विल बी गेटिंग एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट ये सिंपल कांसेप्ट यहाँ पर हमें जीडीपी रु जेमती होतला हम पक आस्तला कोन एनडीपी इन द सेम वे जीएनपी रु मध्य वी कैन गेट एनएनपी सो या सहित हम गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट बर्तमान डिस्कशन करबा कि कन्वर्जन केमती आपको कन्वर्ज करा जाय परिबो कन्वर्जन केमती रही परिबो बाको केमती हम कन्वर्ट करि परिबा से विषय डिस्कशन करबा हमें ऑलरेडी ए पर्यंत डिस्कस करि सारचंती कि जीडीपी रु from GDP if we will minus depreciation then you will be getting NDP एटा हमें पढ़ी सारचंती कि जीडीपी रु डेप्रिसिएशन माइनस कला परे हमें एनडीपी पाइबा गोटे सेकंड
नाउ लेट्स डिस्कस कि जीडीपी रु आमे जतबेले माइनस करूथिले डेप्रिसिएशन देन यू विल बी गेटिंग एनडीपी सिंपल जिंस एंड एठी आमे देखिले कि सेमते जीएनपी रु आमे जतबेले माइनस करूछंती डेप्रिसिएशन देन वी आर गेटिंग एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट आमे एठी पाउछंती नेट नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी और जीएनपी या भीतर जदि आमे रिलेशन देखिबा देन जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज इक्वल्स टू जीएनपी सेमती एनडीपी रे जदि आमे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करिबा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड देन यू विल बी गेटिंग एनएनपी ये हला हमर गोटे बेसिक चार्ट जोटा हमको मन रखिया पड़ियो बेसिक चार्ट जोटा हमको मन रखिया पड़ियो जीडीपी रु जीएनपी कन्वर्जन केमती ही परिबो एनडीपी एंड एनएनपी कन्वर्जन केमती ही परिबो गोटे ट्रिक कहू जेठी मन रखिबे कि जेतोले एरो रो डायरेक्शन में जाउछंती व्हेन यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द एरोस देन यू नीड टू ऐड यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाउछंती सबट्रैक्ट इट अपोजिट डायरेक्शन में गले आको सबट्रैक्ट करिवे दैट्स ऑल एतिक जिंस हमको एटी बुझिबार अछि तो मु गोटे एग्जांपल बुझौची एग्जांपल थ्रू देखिबा को कोन करियबो एग्जांपल हिसाब रे बुझिबा कि लेट्स से क्वेश्चन अछि कि जीडीपी प्लस डैश इज इक्वल्स टू जीएनपी देखंतु एटी जीडीपी अछि एंड एटी जीएनपी जाउछंती देन नेक्स्ट आ गोटे एग्जांपल बुझौची वर्तमान सो आमे पहले जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन एनडीपी then GDP plus net factor income from abroad is equals to GNP NDP रे जतला में net factor income from abroad add कले then you will be getting NNP and GNP रू depreciation minus कले आमे पाइले NNP या सहित आमे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस रो कांसेप्ट को वर्तमान जदि आमे ऐड करिबा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस देखिबा कि फैक्टर को परे एठी कोन आसीबो answer then we will be getting let's discuss क्या हम कौन एटी आंसर पाइबा let's say हम ऐड करछन फैक्टर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड इटा अछि जीएनपी एट मार्केट प्राइस आको हमर कन्वर्जन करिवार अछि सो लेट्स से द क्वेश्चन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डैश इज इक्वल्स टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस एठी हमरा चेंज कोन करिवार अछि देखन कन्वर्ट काहा को करिवार अछि ग्रॉस को ग्रॉस अछि एठी जीडीपी एठी जीएनपी सो एको किछि चेंज करिवार आवश्यकता नाही तल चेंज एठी कोन होबो ना फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस केमति चेंज करंती वी नीड टू ऐड फैक्टर कॉस्ट रे वी नीड टू ऐड एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स मॉर्निंग क्लास रे हम एटा डिस्कस करथिले कि एनआईटी केमति ऐड करा जाय परिबो तो एठी हम एनआईटी ऐड कला परे हमर मार्केट प्राइस हे गला द नेक्स्ट थिंग ये कहूची कि जीडीपी रु जीएनपी रे पहुंचवार अछि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रु ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रे पहुंचवार अछि सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड वी नीड टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ठीक अछि आ गोटे क्वेश्चन करबा हमें मानि नंतु अछि जीडीपी एट मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस टू एनडीपी एट एको हम केमति करि परिबा जीडीपी एट फैक्टर प्राइस मार्केट प्राइस प्लस डैश इक्वल्स टू इट मार्केट प्राइस रो फैक्टर कॉस्ट होची अर्थात हमको एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करबा को पड़िबो जीडीपी रो एनडीपी हेची जीडीपी रो एनडीपी केते बेल होय ना त हम डेप्रिसिएशन माइनस करन सो माइनस डी आई होप यू आर क्लियर विथ दिस एक्सप्लेनेशन ये चार्ट को मन रखिबे एंड गोटिए जिंस एठी खाली ध्यान देबे कि आरो रो सेम डायरेक्शन में जतबे जिबे ऐड करिवे आरो रो अपोजिट डायरेक्शन में जदि जाउछंती then you need to see जिंस बुझले ये क्वेश्चन आंसर then you can easily solve those questions can GNP be more than GDP GNP GDP रु अधिक होई परिबो कि द क्वेश्चन ताले एठी हम कोन करबा माने आपको केमती आंसर करबा यार लेट्स से कि जीडीपी जीएनपी रु अधिक अछि then in that at that point of time ki income from abroad is negative income from abroad is negative gdp माने कोन gdp हम देखियो as compared to the national see gdp हम गोटे जिंस केवल देखले कि geographical territory अनुसार देखले geographical territory कि इंडिया भीतर केति प्रोडक्शन होची जीएनपी हम कोन देखले इंडियन माने केते प्रोडक्शन करूचंती इंडियन माने केते टोटल प्रोडक्शन करूचंती जो समय रे इंडियन माने कम प्रोडक्शन करिवे
जो समय इंडियन माने कम प्रोडक्शन करिवे एंड जीडीपी अधिक हम से समय आम कहवा कि इनकम फ्रॉम अब्रोड इज नेगेटिव एंड दिस इज द केस वी हैव जीडीपी मोर देन द जीएनपी इंडिया केस कि को समय जीएनपी विल बी मोर देन जीडीपी जीएनपी केतेबेले हबो ना इंडियंस विल अर्न मोर मीन्स दे विल जनरेट मोर इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज अधिक हबो बट जीएनपी हम सिंपली कहि परिबा जीएनपी विल बी मोर देन जीडीपी नेक्स्ट देखिए कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस कौन नेशनल इनकम और द जीडीपी एट इजी करिया पाई हमें गोटे बेस ईयर रो प्राइस को हमें स्टैंडर्ड प्राइस हिसाब रे नबा बेस ईयर रो प्राइस को हमें स्टैंडर्ड प्राइस हिसाब रे नबा जा को हमें 2011-12 बोली नियंती सो एटी हिसाब केमते करिया बा कैलकुलेशन केमते हबो मानि नियंतु टोटल प्रोडक्शन केते हिची हमें हिसाब करले को ईयर ना 2020-21 फाइनेंशियल ईयर रे टोटल प्रोडक्शन केते हिची हमें बाहर कर देले लेट्स से कि दिस इज 500 क्विंटल देन यार वैल्यू केते 500 क्विंटल रो वैल्यू को हमें दीटा वे रे बाहर करि परिबा फर्स्ट 2011-12 रो प्राइस रे एंड 2020-21 रो प्राइस रे दीटा प्राइस रे हमें बाहर करि परिबा फर्स्ट प्राइस कोटा एटी आसुचे 2011-12 प्राइस माने बेस ईयर प्राइस रे वी कैन कैलकुलेट एंड 2020-21 माने करंट प्राइस रे हमें बाहर करि परिबा जेतोला हमें बेस ईयर प्राइस रे कैलकुलेट करंती when base year price rate is calculated that is called real gdp ताकू real gdp कहंती and current price रे calculate कले ताकू हमें nominal gdp बोली कहंती that is called nominal gdp बुझिहला तो याकू दीटा ईयर प्राइस रे कैलकुलेट करिवार मीनिंग कोन और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी रे इन्फ्लेशन केते हिची हमें बाहर करन देथि इन्फ्लेशन केते हिची माने हम केमति जानि परिबा एतरु ना हम सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को 2011-12 अर्थात बेस ईयर प्राइस रे भी बाहर करछंती प्लस करंट ईयर प्राइस रे भी बाहर करछंती सो नेशनल इनकम जेता हम करंट प्राइस कहंती कांस्टेंट प्राइस कहंती नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस रो मीनिंग होची कि टोटल प्रोडक्शन सेम ईयर रे ए ईयर रो प्रोडक्शन बट प्राइस हमें नबा कहर ना बेस ईयर रो प्राइस बेस ईयर रो बट क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन जीडीपी एट द करंट प्राइस जदि हम मानिने 2020 पई कैलकुलेट करबा ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू टोटल क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ 2020 सेम ईयर कले हमें जहा पाइबा ताकुंती नेशनल इनकम और जीडीपी एट द करंट प्राइस दिस इज कॉल्ड जीडीपी एट करंट प्राइस बाकू नॉमिनल जीडीपी बोली कहंदे दिस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी आई होप यू आर क्लियर विथ इट आउ थरे मु क्लैरिटी दे दोछि कि रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी हमें बेस ईयर प्राइस रे जेतेबेले कैलकुलेट करंती मिले नॉमिनल जीडीपी जेतेबेले हमें करंट ईयर रो प्राइस रे कैलकुलेट करंती मिले एको करिवार कारण कोन करंट ईयर प्राइस रे कैलकुलेट करिवार कारण करंट ईयर प्राइस रे जदि हमें कैलकुलेट करबा बेस ईयर संगे रे हमें कंपेयर करि परिबा इजिली कंपेयर कले हमको कोन मिलिबो ना इन द इकोनॉमी वी कैन गेट कि व्हाट इज एक्जेक्टली द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन को इकोनॉमी रे कैलकुलेट करि पारेबा ये कारण पई हम पाखरे रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी अछि सो रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी इनटू 100 माने एटी परसेंटेज चेंज केते हिच हम देखुचंती केते परसेंटेज चेंज हिच बा इन्फ्लेशन रेट जदि हम मेजर करिया को चाहउचंती ताले ए टाइप रे करि परिबा याको कहै जाय जीडीपी डिफ्लेटर the real GDP divided by nominal GDP into 100 that is called GDP deflator. Next, personal income, national income divided by total population of the country. National income of the country that is called personal income. Next हम देखिबा disposable personal income कोन देखंतु disposable अर्थ होची कि the amount of money that a person is left to be disposed ताकू डिस्पोज करिया पय डिस्पोज करिवार अर्थ एटी दीटा वे हम ताकू यूज करि परिबा आइदर द पर्सन कैन सेव दोस मनी और द पर्सन कैन स्पेंड दोस मनी मानि नंतु जनकर इनकम अछि 1 लाख रुपीस एंड द पर्सन कैन नॉट स्पेंड 1 लाख रुपीस बिकॉज़ इट इज स्टैट्यूटरी बा लीगल डिडक्शन रहिबो
जहाँ को हमें टैक्स बोली कहउचंती द पर्सन हैज टू गिव टैक्स सो एठी मानि नियंतु 10,000 रुपीस आसुची टैक्स सो द पर्सन विल बी लेफ्ट विथ 1,000 रुपीस टैक्स टोटल इज कॉल्ड disposable personal income so income that is available for spending as well as saving ताको हमें disposable personal income बोली कहंती तो नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर मेथड आमे देखिबा एक्सपेंडिचर मेथड रे जदि आमे कैलकुलेट करूछंती नेशनल इनकम केमती करिवा GDP is equals to C plus I plus G plus X minus IM. C means the consumption by the household, personal consumption by the household. I is the investment by either by the household in the economy or by the government. Government by household द्वारा payment बुझौची transfer payment कोन. Then X minus IM. X is the export. Total quantity of export and IM is the total quantity of import. ये सब वैल्यू को ऐड कला परे इल बी सब मिसला परे हम एठी जीडीपी पाइबा नेक्स्ट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट देखंतु गवर्नमेंट बेसिकली जने गवर्नमेंट एम्प्लॉय अछि सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सैलरी टू दैट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एटी सैलरी प्रोवाइड करिवो कोन पई कला ना बिकॉज़ द पर्सन इज डूइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट इज पेइंग समथिंग सो एठी को हमें सैलरी बोली कहउचंती तो या बेतिबा खर्च थाए जो जगह रे विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट हैज टू पे गवर्नमेंट पेमेंट करे बट रिटर्न ने किछि इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट को मिले नाही जेमति कि मु कहबी ओल्ड एज एक्टिविटी फॉर द गवर्नमेंट एटी से किछि काम करेनी गवर्नमेंट पाई बा ओल्ड एज पेंशन जेतबे दिया जाय से मान को किछि पेमेंट मिले एंड दोज पेमेंट से पेमेंट मान को इकोनॉमी रे ट्रांसफर पेमेंट बोली कहा जाय एंड व्हेन वी कैलकुलेट जीडीपी हैव टू सबट्रैक्ट द ट्रांसफर पेमेंट्स